In this lecture, we will discuss the poem Crossing the Bar by Lord Tennyson. This poem was written in 1889. It was written 3 years before the death of Lord Tennyson. Lord Tennyson is a well-known Victorian poet. It means he belonged to Victorian age, and that is you can say that he is 19th century writer. So Lord Tennyson is a famous 19th century Victorian poet, and in his poetry he reflects the spirit of Victorian age in a comprehensive manner, and love, death, relationship, myths, history. There are so many themes of his poetry. If we look at the title of the poem title is Crossing the Bar. Now bar represents here sandbar. सैंडबार एक रेत का बार जो है, क्रॉसिंग द बार. Okay, so the theme, the main idea of the sonnet is that the poet is nearing to the death. वो अपने आखिरी दिनों में है लाइफ के. He is contemplating about the death which is nearby. उसके बारे में सोच रहा है. And this poem reflects his mindset, कि उसका उस टाइम कैसा माइंडसेट है अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, वो क्या सोच रहा है, क्या माइंडसेट है, इस बारे में पोइम है. देखिए, ये अगर आप इस पिक्चर को देखें तो बिकॉज बिफोर टू अंडरस्टैंड दिस पोइम वी मस्ट बी अवेयर ऑफ सम जियोग्राफिकल फैक्ट. ये जो है ओशियन है, और ये जो है यहाँ ये बीच है, और यहाँ सैंड की एक रिज बनती है, और दैट इज कॉल्ड एज सैंड बार. जो रिज ऑफ सैंड है एक, उसको बोलते हैं सैंड बार. ये जो ओशियन करंट्स हैं उससे वो बनती है. और होता क्या है कि जब वेव्स दे ट्राई टू रीच टू द शोर मीन्स किनारा, जब वो किनारे की तरफ आने की कोशिश करती हैं तो दे क्रैश अगेंस्ट द सैंड बार, और वो जो सैंड बार रास्ते में होती हैं उनको क्रैश करती हैं, उनके आगे टकराती हैं, और इससे वेव्स टूटती भी हैं, ब्रेक भी होती हैं, और एक साउंड भी आती है, फोम भी क्रिएट होता है, नॉइज क्रिएट होता है. ठीक है. और जब हाई टाइड होता है तो ये जो वाटर है ये बिल्कुल हाई पहुंच जाता है, काफ़ी इस बीच को कवर कर लेता है. और जब लो टाइड होता है तो वाटर जो है वो रिसीड होता है, और ये आपको पता है कि इट इज़ ड्यू टू मून, ग्रेविटी एंड सो मैनी थिंग्स. सो मेटाफोरिकली sandbar represents barrier between life and death. जो सैंड बार है वो लाइफ और डेथ का एक बैरियर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्रॉसिंग द बार मीन्स, और यू कैन से लाइफ एंड द, इट इज अ बैरियर बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड. अगर मैं रिलीजियस टर्म की बात करूं तो उसको भी सैंड बार रिप्रेजेंट करता है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. सन्स बड़ा इजी सी पोएम है, बट इट कैरीज डीप मीनिंग. ये लैंग्वेज बड़ी इजी है, बट इट्स अ वेरी फिलोसफिकल पोएम, रिलीजियस पोएम. और इस पोएम में आपको कहीं ना कहीं जो डेथ बी नॉट प्राउड जो जॉन डन की पोएम है उसकी कुछ रिफ्लेक्शन मिलेगी. सनसेट एंड इवनिंग स्टार and one clear call for me. Clear call, C, K,
दैट इज एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ साउंड में जब होती है तो जैसे क्लियर क साउंड, कॉल क साउंड, तो दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो दिस का एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज ए पोइटिक डिवाइस, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। चलिए, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, द स्पीकर इज सेइंग इट्स सनसेट टाइम एंड द इवनिंग स्टार हैज come, arrived, and one clear call for me. He says that it's the sunset of my life. I know, he realized that it is sunset of my life. My life is going to end now. And this is a clear call for me. And I can realize this very well. I can hear this call. अब ये call किसकी है? It means call from the God. तो स्पीकर कहना चाहता है, स्पीकर वांट्स टू से दैट आवर लाइफ एंड डेथ आर डिसाइडेड बाय गॉड। गॉड ही हमें बर्थ देता है और गॉड ही डिसाइड करता है हमें कब मरना है। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रियलाइज दैट माई फाइनल कॉल हैज कम, मुझे बुला लिया गया है, एंड माई लाइफ सनसेट हैज अराइव्ड, मुझे जाना है। And may there be no mourning of the bar when I put out to sea. वो कह रहा है but I have some wish, मेरी एक इच्छा है कि when I put out to sea, यानी मैं जब समुद्र में चला जाऊं, it means when I leave this world, why when I start journey into the next world, there should be no mourning of the bar. मौन करना होता है दुख मनाना, शोक मनाना। तो कहता है कि जो सैंड बार है, इट शुड नॉट क्रिएट एनी नॉइज, इट शुड नॉट क्रिएट एनी साउंड, मीन्स आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली, आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली, देयर शुड बी नो नॉइज, नो टेंशन, नथिंग एल्स। मीन्स द पोइट इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट ऑफ डेथ, एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज बिकॉज ही नोज दैट डेथ इज डिसाइडेड बाय गॉड, इट्स ए नेचुरल थिंग। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेंजा, बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स asleep, टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म। वो कह रहा था कि अब लुक एट द वर्ड टाइड, ये टाइड जो है, जो टाइड आपको पता है, हाई टाइड, लो टाइड, वो कहता है कि मैं आई वॉन्ट टू मूव ऑन ए हाई टाइड, हाई टाइड, एंड द टाइड शुड बी वेरी काम, द वेव शुड बी वेरी काम, दे शुड बी लाइक दे आर स्लीपिंग, बिल्कुल शांत होनी चाहिए, ऐसा लगता चाहिए कि दे आर स्लीपिंग, एंड देयर शुड बी नो साउंड एंड फोम, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए वेव्स की, देयर शुड बी नो फोम, बिल्कुल कामली आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पीसफुली आई वॉन्ट टू लिव दिस वर्ल्ड। When that which drew from out the boundless turns again home, means I want to turn again home, I want to go back to my home now. Again, it means the poet is saying that we all have come from some other place to this earth, and after that we again return to our original place. कह रहा है दुनिया में, वो कह रहा है कि देर इज वर्ल्ड एंड देर इज नेक्स्ट वर्ल्ड, इट्स ए रिलीजियस बिलीफ कि इस दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया भी है। जैसा कि डेथ वी नॉट प्राउड में जॉन डन ने कहा कि डेथ कैन नॉट किल एनीवन, डेथ किसी को मार ही नहीं सकती, बिकॉज आफ्टर लिविंग दिस वर्ल्ड वी एंटर इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड, और वहां हम इमोर्टल हो जाते हैं। आवर सोल इज always permanent, it is immortal, it is only our bodies that die. So he wants to turn back, he wants to go his home again with peace and calmness.
Twilight and evening bell. Twilight means it's evening time. The church evening, the evening bell of church have started to ring. And after that dark, it means see the imagery. The poet is creating an atmosphere of the evening. Very calm atmosphere. And he says, after this evening, there will be dark. There will be death. I will leave this world. And may there be no sadness of farewell. Again, he is repeating the same idea that I don't want any sad farewell. I don't want that people should cry after me. People should feel bad after me. Even I don't want to feel bad. I want to leave this world peacefully. When I embark का मतलब होता है स्टार्टिंग द जर्नी. वो कह रहा है कि अब मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ. एंड मैं चाहता हूँ कि जब मैं जर्नी स्टार्ट करूँ, इन मीन्स जर्नी का जर्नी टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ल्ड, जब मैं दूसरी दुनिया में जाऊँ तो देयर शुड बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल. तो मेरी विदाई में कोई सैडनेस, कोई सोरो नहीं होनी चाहिए. For those from out born of time and place, the flood may bear me far. वो कहता है जो flood है, I will go out of the boundaries of time and place. यानी जब मैं I will leave this world, I will be away from the boundaries of time and place. I will go to eternal places. जहाँ टाइम प्लेस की बाउंड्री नहीं, मैं वहाँ चला जाऊँगा. I will bear me far. That is very far place. I hope to see my pilot. Now this is very important metaphor. Pilot represents God, the supreme God. I hope to see my pilot face to face. And in the next world, I will meet face to face my God, my pilot. Why he is comparing God with pilot? Because like a pilot, it guides the journey of our life. God guides our life like a pilot. When I crossed the bar, और जब मैं बार क्रॉस कर लूँगा, means when I leave this world and when I will reach the next world after crossing the bar, I can meet face to face with my God, and I will find happiness and calmness there. So this is a very important poem and very philosophical and religious poem about death. And the message of the poem is that life, birth and death are natural things. Everybody has to come, everybody has to go, and we need to accept the fact of death with calm, with peace. And after death, our soul goes to next world, and we can meet to our master, our pilot. That's it. So we will meet in the next lecture. See you soon. और अगर आपको कोई फीडबैक या कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक.